हेलो स्टूडेंट्स। आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं यह क्वेश्चन जून 2019 के CSIR के मैथमेटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। इन शॉर्ट लेट अस सी व्हाट द क्वेश्चन इज। यहाँ हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है जो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें y का कोफिशिएंट एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस और एक पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड t। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, इसके दो सॉल्यूशन हैं phi1 और phi2 और दोनों सॉल्यूशन लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं। नेक्स्ट phi1 0 की वैल्यू 1 दी हुई है, phi1 डैश 0 इक्वल टू 0, phi2 0 की वैल्यू 0 और phi2 डैश 0 की वैल्यू 1 दी हुई है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि phi1 और phi2 में से एक पीरियोडिक फंक्शन है। तब हमें फाइंड आउट करना है wx, रॉन्स्कियन की वैल्यू फाइंड आउट करना है और phi1t प्लस phi2 डैश t का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक कंसेप्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो इस प्रकार है। यह wx रॉन्स्कियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है जो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दी हुई है। फर्स्ट रो में सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट का कलेक्शन लेना है, सेकेंड रो में इस सारे फंक्शंस के डिफरेंशिएशन का कलेक्शन लेना है। रॉन्स्कियन फाइंड आउट करने का नेक्स्ट फार्मूला है जिसे हम अबेल्स फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। दिस फार्मूला सेज दैट इफ यू हैव अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर b1x is the coefficient of y dash and b2x is the coefficient of y, and these coefficients are continuous functions. Then the Wronskian is given by this formula. Okay, this formula also works for nth order differential equation. Suppose you have a differential equation of the form bny equal to 0, then also you can use the same formula. Next concept is, if f is a differentiable and periodic function with period t, अगर हमारे पास कोई एक डिफरेंशिएबल फंक्शन f है और इसका पीरियड t है, तब हम क्या कह सकते हैं कि f का डिफरेंशिएशन भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा और विद द सेम पीरियड t। ओके, यहाँ मैंने एक बुक रिकमेंड की है, इस बुक का नाम है एस.एल. रॉस, जो कि काफ़ी पॉपुलर बुक है। नाउ वी स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। So what is our formula to find out the Wronskian? It is wx equal to phi1x, phi2x, phi1 dash x, phi2 dash x. Okay, so directly using this formula we will not be able to find out the Wronskian because we are not given phi1, the value of phi1, phi2, phi1 dash and phi2 dash. Okay, but some initial conditions are given. We are given the value of phi1 0, phi2 0, phi1 dash 0 and phi2 dash 0. So from this value what we will find? We will find the value of w0. Okay, so what it will be? The value of phi1 0 is 1, phi2 0 is 0, phi1 dash 0 is 0 and phi2 dash 0 is 1. Therefore this determinant is 1. So we are getting here the value of 0, but we have to find out the value of wx. Okay, so what will we do?
we will apply the Abel's formula. Abel's formula says that e to the power minus x naught to x b1s ds into w x naught. Put 0 in place of x naught, then you will get 0 to x b1s ds w naught. The value of w naught is 1. And what is b1s? b1s क्या है? b1s है coefficient of y dash. Okay, but what is your differential equation? Your differential equation is y double dash plus ax y equal to 0. Here y dash is missing, therefore the coefficient of y dash will be 0. So this entire thing will be 0, means e to the power minus 0 we can say into 1. w0 is 1, therefore here it is 1. So ultimately we are getting wx equal to 1. So first requirement of the question is fulfilled. We have computed the value of wx equal to 1. अगर कोई जल्दबाजी में ये कंसिडर कर ले कि phi1 और phi2 दोनों ही पीरियोडिक फंक्शन हैं, तो phi1 डैश और phi2 डैश भी पीरियोडिक हो जाएंगे, और तब चूँकि phi1 0 का वैल्यू 1 है तो ये phi1 t का भी वैल्यू हो जाएगा, और phi2 डैश 0 का वैल्यू 1 है तो ये phi2 डैश t का भी वैल्यू हो जाएगा. Then after adding these two things we will get phi1 t plus phi2 dash t equal to 2. बट हमें यहाँ कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करना है, तो जिस प्रकार क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन दोनों में से कोई एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो हम यहाँ पर phi1 को पीरियोडिक मान लेते हैं. ओके, phi2 may or may not be periodic, so we only suppose that phi1 is periodic. Then phi1 dash भी periodic हो जाएगा, और तब चूँकि phi1 0 का वैल्यू 1 है तो ये phi1 t का भी वैल्यू हो जाएगा, और phi1 dash 0 का वैल्यू 0 है तो ये phi1 dash t का भी वैल्यू हो जाएगा. ओके, सो हमें ये इंफॉर्मेशन है, तो हमें इस इंफॉर्मेशन से रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें रॉन्स्कियन की वैल्यू पता है, रॉन्स्कियन हमारा 1 है, और फार्मूला से रॉन्स्कियन की वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट in the first row phi1x, phi2x, then phi1 dash x, phi2 dash x. This is 1. Okay, then it will be phi1x into phi2 dash x minus phi2x into phi1 dash x equal to 1. Now put t in place of x, so we will get this expression. Now put these values. Phi1 t is 1. We have to find out the phi2 dash t, and phi2 t we don't know what it will be, and phi1 dash t is 0. Okay, so ultimately we are getting here phi2 dash t equal to 1. Okay, and what is phi1 t? Phi1 t is also 1. Here you can see phi1 t is 1. So phi1 t plus phi2 dash t will be 1 plus 1 equal to 2. Okay,
So in this way we have calculated that phi1t plus phi2-t is 2. तो अगर कोई कंसिडर करता है कि phi2 पीरियोडिक है, then again the same value we will get. Okay, you can try to calculate it, the same value it will come. Okay, so what will be our options? We have already calculated wx equal to 1 and this value. So come to the options. So your option 1 and option 3 are correct, and these two options 2 and 4 are incorrect.